16-year-old Japanese Serato Shimizu sets a new world record for the U18 100 meters. Serato Shimizu, it's worth remembering this name. The 16-year-old Japanese has just set a new world record for the U18 juniors in the 100 meters. His achievement has received widespread attention. With his sensational time, the teenager met the qualifying minimum for the upcoming World Senior Championships in Tokyo. The Japanese have long been a powerhouse in sprints, but they shine more as a team than individually. The result? Several medals in the 4x100-meter relay, starting with a historic silver at the 2008 Beijing Olympics. Perhaps a new star is emerging? Shimizu demonstrated his class at the Japanese Championships on July 4, clocking a time of 10.19 seconds. He missed qualifying for the final by hundredths of a second. On Saturday, he showcased his skills to the world at the Japanese Interschool Championships in Hiroshima. Born on February 8, 2009, the sprinter ran the 100 meters in exactly 10 seconds. This set a new world record in the under-18 category. The previous record was 10.06 seconds, held by American Christian Miller and Thai Purapal Boonsun since 2023. Shimizu was hoping for even more. And that wasn't the end of his achievements. The 16-year-old also broke the national high school record of 10.01 seconds, set by Yoshihide Kiryu in 2013. This also tied him for the fifth best time by any Japanese athlete at this distance. I was determined to run the distance in under 10 seconds. I'm happy I set the record, a happy Shimizu admitted. By breaking the 10-second mark, the young Japanese athlete met the minimum qualification for the World Senior Championships in Tokyo in September. The young athlete's achievement went unnoticed elsewhere in the world. Many fans predicted that the star the Japanese had been waiting for would be Abdul Hakim Sani Brown, who surprised the world with a double gold medal in the 100 and 200 meters at the 2015 World Under-18 Championships in Cali. But he didn't make the expected progress. He's now 26. Therefore, it's no surprise that the emergence of the phenomenon Serato, a 16-year-old kid, caused a stir in the land of the rising sun, commented the Spanish daily Marca. The World Championships will take place in the Japanese capital from September 13 to 21. Luckle/loop 16歳の日本人、清水空仁選手が U18 ジュニア100メートルで世界新記録を樹立。清水空仁選手。この名前は覚えておく価値がある。16歳の日本人選手が U18 ジュニア100メートルで世界新記録を樹立したのだ。彼の快挙は広く注目を集めた。驚異的なタイムで、この100メートル走の出場資格は東京で開催される世界シニア選手権の出場資格を満たした日本は長年短距離走の強豪国だが、個人よりもチームとしての方が輝きを放っている。その結果は2008年北京オリンピックでの歴史的な銀メダルを皮切りに 4×100 メートルリレーで数々のメダルを獲得した。もしかしたら新たなスターが誕生するかもしれない。清水選手は7月4日に行われた全日本選手権で 10.19 秒というタイムを叩き出し、その実力を見せつけた。決勝進出はわずか100分の1秒差で逃した土曜日、彼は広島で開催された全日本高校総体でその実力を世界に披露しました。2009年2月8日生まれの彼は100メートルを10秒ちょうどで走りました。これは18歳以下のカテゴリーで世界新記録を樹立しました。これまでの記録はアメリカのクリスチャン・ミラーとタイのプリポル・ブーンソンが2023年から保持している10秒6でした。清水はさらなる高みを目指していました。そして彼の偉業はこれで終わりではありませんでした。16歳の彼は2013年に桐生幸秀が樹立した10秒1の高校日本記録も破りました。これはこの距離における日本人選手の
ご遺体記録でもありました。10秒を切ることを決意していました。記録を樹立できて嬉しいですと、清水は喜びを語りました。10秒台を突破したこの若き日本人選手は9月に東京で開催される世界シニア選手権への出場資格を最低限満たした。この若きアスリートの偉業は世界の他の地域では注目されなかった。多くのファンは日本人が待ち望んでいたスター選手は2015年にパリで開催された世界遊の18選手権で100メートルと200メートルのダブル金メダルを獲得し、世界を驚かせたアブドゥル・ハキム・サニブラウンだと予想していた。しかし、彼は期待されたほどの進歩を遂げることができなかった。現在26歳。だからこそ、16歳の空という驚異的な若手の台頭が日の出ずる国で旋風を巻き起こしたのも当然だと、スペインの日刊紙マルカは評した。世界選手権は9月13日から21日まで東京で開催される。LUKL ループ。16세 일본 소년 시미즈 소라토. U1800m 세계 신기록 수립. 시미즈 소라토. 이 이름은 기억할 가치가 있습니다. 16세 일본 소년 시미즈는 U18 주니어 100m 세계 신기록을 수립했습니다. 그의 업적은 널리 주목을 받았습니다. 놀라운 기록으로 그는 다가오는 도쿄 세계 시니어 선수권 대회 출전 최소 자격 요건을 충족했습니다. 일본은 오랫동안 단거리 달리기 강국이었지만 개인보다는 팀워크가 더욱 빛을 발합니다. 결과는 2008 베이징 올림픽에서 역사적인 은메달을 시작으로 4x100m 계주에서 여러 개의 메달을 획득했습니다. 새로운 스타가 떠오르고 있는 걸까요? 시미즈는 7월 4일 일본 선수권 대회에서 10.19초를 기록하며 뛰어난 기량을 보여주었습니다. 하지만 결승 진출에는 0.1초 차이로 실패했습니다. 토요일, 그는 히로시마에서 열린 일본 고등학교 선수권 대회에서 자신의 기량을 세상에 선보였습니다. 2009년 2월 8일생인 그는 100m를 정확히 10초 만에 주파했습니다. 이 기록은 18세 이하 부문에서 새로운 세계 기록을 세웠습니다. 이전 기록은 미국의 크리스 찬 밀러와 태국의 프리폴 분슨이 2023년부터 보유하고 있던 10초 06이었습니다. 시미즈는 더 큰 기록을 원했습니다. 그리고 그의 업적은 여기서 끝나지 않았습니다. 16세인 그는 2013년 기류 요시히데가 세운 10초 01의 전국 고등학교 기록도 경신했습니다. 이 기록은 또한 이 종목에서 일본 선수 중 5번째로 빠른 기록이기도 합니다. 10초 안에 주파하겠다고 마음먹었습니다. 기록을 세워서 기쁩니다. 시미즈는 기뻐하며 말했습니다. 10초대를 돌파하며 이 젊은 일본 선수는 9월 도쿄에서 열리는 세계 시니어 선수권 대회 최소 출전 자격을 충족했습니다. 이 젊은 선수의 업적은 세계 다른 곳에서는 주목받지 못했습니다. 많은 팬들은 일본이 기다려온 스타가 압둘 하킴 사니 브라운일 것이라고 예상했습니다. 그는 2015년 칼리에서 열린 세계 18세 이하 선수권 대회에서 100m와 200m에서 금메달을 따내며 세상을 놀라게 했습니다. 하지만 그는 예상대로 발전하지 못했습니다. 그의 나이 26세. 따라서 16세 소년 소라토의 등장이 떠오르는 태양의 나라 일본에서 큰 반향을 일으킨 것은 놀라운 일이 아닙니다. 라고 스페인 일간지 마르카는 평했습니다. 세계 선수권 대회는 9월 13일부터 21일까지 일본의 수도에서 개최됩니다. 록루프 16 वर्षीय जापानी सोराटो शिमिजू ने अंडर 18 100 मीटर दौड़ में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। सोराटो शिमिजू, यह नाम याद रखना जरूरी है।
इस 16 वर्षीय जापानी ने अंडर 18 जूनियर वर्ग में 100 मीटर दौड़ में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। उनकी इस उपलब्धि ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। अपने शानदार समय के साथ इस किशोर ने टोक्यो में होने वाली आगामी विश्व सीनियर चैंपियनशिप के लिए न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर ली है। जापानी लंबे समय से स्प्रिंट में एक शक्तिशाली खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से कम और एक टीम के रूप में ज्यादा चमकते हैं। परिणाम 4x100 मीटर रिले में कई पदक, जिसकी शुरुआत 2008 बीजिंग ओलंपिक में ऐतिहासिक रजत पदक से हुई। शायद कोई नया सितारा उभर रहा है। शिमिज़ु ने 4 जुलाई को जापानी चैंपियनशिप में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए 10.19 सेकंड का समय निकाला। वह 1 सेकंड के 100वें हिस्से से फाइनल के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। शनिवार को उन्होंने हिरोशिमा में जापानी अंतरविद्यालय चैंपियनशिप में दुनिया के सामने अपने कौशल का प्रदर्शन किया। 8 फरवरी 2009 को जन्मे इस धावक ने 100 मीटर की दौड़ ठीक 10 सेकंड में पूरी की। इसने अंडर 18 वर्ग में एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड 10.06 सेकंड का था, जो 2023 से अमेरिकी क्रिश्चियन मिलर और थाई पुरीपोल बूनसन के नाम है। शिमिज़ु इससे भी ज्यादा की उम्मीद कर रहे थे, और उनकी उपलब्धियां यहीं खत्म नहीं हुईं। इस 16 वर्षीय धावक ने 2013 में योशिहिदे किरयू द्वारा बनाए गए 10.01 सेकंड के राष्ट्रीय हाई स्कूल रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। इसने उन्हें इस दूरी पर किसी भी जापानी एथलीट द्वारा बनाए गए 5वें सर्वश्रेष्ठ समय के साथ बराबरी पर ला दिया। खुश शिमिज़ु ने कहा, मैं यह दूरी 10 सेकंड से कम समय में पूरी करने के लिए दृढ़ था। मुझे खुशी है कि मैंने यह रिकॉर्ड बनाया। 10 सेकंड का आंकड़ा पार करके इस युवा जापानी एथलीट ने सितंबर में टोक्यो में होने वाली विश्व सीनियर चैंपियनशिप के लिए न्यूनतम योग्यता हासिल कर ली। इस युवा एथलीट की उपलब्धि दुनिया के अन्य हिस्सों में किसी की नज़र में नहीं आई। कई प्रशंसकों ने भविष्यवाणी की थी कि जिस स्टार का जापानी लोग इंतजार कर रहे थे, वह अब्दुल हकीम सानी ब्राउन होंगे, जिन्होंने कैली में 2015 विश्व अंडर 18 चैंपियनशिप में 100 और 200 मीटर में दोहरा स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चौंका दिया था। लेकिन वह अपेक्षित प्रगति नहीं कर पाए। अब वह 26 वर्ष के हैं, इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 16 वर्षीय सोराटो के उभरने से उगते सूरज की भूमि में हलचल मच गई। स्पेनिश दैनिक मार्का ने टिप्पणी की, विश्व चैंपियनशिप सितंबर के 13 से 21 तक जापानी राजधानी में आयोजित होगी। लोकल लूप।